Namaste dosto. So today we are studying about Kepler's law of motions. I've told about the laws in the first of my video, and today I will be doing the explanations. So what is the first law? First law is nothing but the law of orbit. Let us just write the law. Okay, it is very easy law. When planets move around the sun, they keep sun at one of the foci. Foci means what? Focus is the plural form of focus. Okay, what it wants to say is that suppose here is one planet. It moves in an elliptical orbit, keeping sun at one of the focus. Suppose this is one axis and this is another axis. This is one focus. Let us just name it as f1 and let it just name is at f2. So when planets move around the sun, then the sun is at one of the focus, that is either it is at the f1 or it is at the f2. Okay, so this is called semi major axis. Let us just name it a, and this is called minor axis, and let us just name it b. Okay, so this point let us name it as p. Okay, now there is a law which says that pf1 plus pf2 equal to af1 plus af2. Now what is a? This is the, let this point be a, let this point be b, and which is equal to bf2 plus bf1. Okay, it is already stated law. I am not anything doing, this is already stated. I am just writing in mathematical form. Okay, that is the distance of the planet to the foci and their summation is equal to the from af1 is equal to the summation of af1 and af2, or equal to the summation of bf2 plus bf1. Okay, so it is clear. And now see what is the minimum distance from the focus, af1 and bf2. So you can write that minimum distance from both focus af1 and bf2. So this minimum distance are same, so we can write that the f1 equal to bf2. We have got here pf1 plus pf2, so we can write here pf1 plus pf2 equal to f1 plus af2. So instead of af1 we can write bf2, so bf2 plus af2, which is equal to, see, bf2 that is this part and af2 that is this part. So this af2 plus bf2 that is equal to what? AB, which is equal to 2a. And what is a? This is semi major axis. And 2a means whole part, so that 2a whole is nothing but the major axis. Okay, now let us just name this pf1 as r1 and pf2 as r2. So we can obviously say that r1 plus r2 equal to r minimum plus r maximum, because if r1 is minimum, then we can we can say that r2 is maximum. Yes or no? That is the fact. Okay, so let us just write it as let us just suppose that a equal to r1 plus r2 by 2, which is equal to, we can write r minimum plus r maximum by 2. This is r maximum by 2. This is what? Nothing but the average distance. Okay, so we have considered that a equal to r1 plus r2. This is, we have
supposed that, let us just take one imaginary number which is a, and we have given its value as r1 plus r2 divided by 2. This is 2. Okay, this is 2. So from the first law we get nothing, but it is the law of the orbit which states that when the planets move around the sun, it keeps the sun at one of the foci and it moves in an elliptical path. This is the first law of Kepler. Okay, and from that we derived these things, that distance from the both focus is minimum, so we can there say that p of 1 plus p of 2, that is equal to the major axis. We've considered these. Okay, that is equal to, no, this a is not okay for your, we're keeping it as a prime. This a prime is different from this a which we have considered it as semi-major axis. So 2a is major axis and b is the minor axis we have considered. These are all things we came to know from the first law of Kepler. Now coming to the second law. Second law is nothing but the law of areas. Law of areas. Okay, second law is nothing but the law of areas. Now what does this say? This says that line of joining between the sun and planet subtends out equal area in equal time interval. That means we can say that it has aerial speed as constant. What does this law says? That suppose here is one planet. It is moving around the sun in elliptical orbit, keeping the sun at one of the foci. Okay, suppose this is one focus f1, another focus f2, moving. Okay, and now let this point be named as a. Now the planet moves from a to b, this point b, in the time interval t. Now if this planet moves from b to c at the same time interval t, then the area covered by AB and BC, that will be equal. That is area of AB. Sorry, just let this point be named as S. So ABS equal to area of BSC. Okay, this is what the law says. If there is equal interval of times, means if the planet takes t time to go from A to B and it takes t time to go from B to C, then the area covered by it is equal. Okay, so let us just do something mathematics using this. What is the mathematics we will be doing? Just let us check. Okay, we've said that triangle with SAB or ABS, what you say, is equal to triangle SBC. You have said it. Okay, now suppose this means this AB distance is very small, so this angle will be d theta. Okay, so we can write it as angle ASB equal to d theta when AB is too small. So when AB is too small, we can also consider AB as straight line. See, from property we know that if this is the angle, if this is the theta and this is the arc, let us just name it as this part AS as R. Okay, and suppose this is a R and this is A and this is B. So we can say that d theta, that is this angle, equal to S by R. That is, this is the S. Sorry. That is S means, sorry,
distance by radius. So here S is what? AB by R, we can say that. So AB equal to R d theta, we can write that. So area of triangle SAB equal to half of SA into AB, that is, half of height into base. That only we have written. So half of ए बी की जगह हम आर डी थीटा लिख सकते हैं, और ए से तो हमने आर डिनोट किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा इंटू आर. That becomes half r square d theta. That is the area of triangle SAB. Okay. Now let us just divide this area of triangle SAB by t. Okay, delta t. Then we will get the speed. Yes or no? That is the aerial speed we will get. So we have to write that aerial speed equal to area of triangle SAB by delta t. What is the area of triangle SAB? Half r square d theta, and that is by t. And we know from rotational motion that v equal to omega into r. We know this, that v equal to omega into r. V equal to omega into r. So we can say that, what we can say, half r square omega, we can say this, d theta by t. Oh, sorry, wrong expression. This is for this half r square omega, so that will be half into rv, and half r square d theta by t, no, omega equal to theta by t time period. You know this from circular motion, so that is only. So half r square d theta by t, and d theta by t becomes omega, and r square into omega, that is v equal to omega into r. So if it is omega into r, then it is, suppose, then also we have to see this v equal to omega into r. If we multiply r once this side, we have to r this side, so it is omega r square, so it becomes r into v, it is half r v. Okay, that is the aerial speed becomes half r v. Now let us just suppose that m is the mass of the planet. Let us suppose m is the mass of the planet. Then angular momentum, that is L, denoted by this is angular momentum. We denote it as L. So L equal to mvr, we know that. So we have got what? Aerial speed, we have got what? Aerial speed, we have got half rv, or vr, what you say, and L equal to mvr. So if we divide aerial speed by L, and then we get half rv by mvr. So if we cancel this r, we get 1 by 2m. That is aerial speed equal to L by 2m, which is constant. Okay, so the second law indicates conservation of angular momentum. Okay, that is what is about second law. So Kepler's second law, we can say that is equal to the conservation of angular momentum, okay, because L by 2m is constant. So indirectly second law indicates that conservation of angular momentum. So what the second law indicates actually? Second law tells of Kepler's law, it is actually the law of areas. It tells that when the planets move around the sun, it covers equal area and equal intervals of time, and that is their aerial speed remains constant. Only we have proved it. Aerial speed equal to L by 2m, which is constant. Okay, that's all we had. This relation, if you have not understood, I'm just telling once again. See, we have got area of triangle SAB. Okay, now
what is the area of triangle SAB? Half r square d theta. Then we have tried to bring out the aerial speed. Aerial speed is the area by the time taken. So we are taking on the aerial speed. Aerial speed is what? Area covered by the time taken. We have taken the time taken as delta t. So area covered is delta SAB and time taken is delta t. So half r square d theta by t. Now d theta by t, from rotational motion we know that omega equal to theta by t. Theta is what? Angular displacement. T is what? Time period. So d theta by t becomes omega. Now omega v equal to omega r, we know that is also from rotational motion, and is half r square omega. So omega r equal to v. So omega r square becomes vr. That is aerial speed. Now L equal to mvr. We have divided aerial speed by L. We get 1 by 2m, and aerial speed equal to L by 2m, which is constant, which is the second law of Kepler, which is law of radius. Okay, coming to third law. What does third law says? Third law is nothing but the law of time period. Okay, law of टाइम पीरियड। ये इसका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मैं उतना बोल नहीं सकता। एक ही चीज़ बता देता हूँ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, बस इससे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इस लॉ में क्या बोलता है? बोलता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, मतलब एक प्लैनेट को घूमने में जितना टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, देखो और एक बार बता देता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड है ना, रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन, मतलब सन के आसपास एक बार घूमने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर, टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, अभी देखा एक इसे चीज़ निकालता आता है। हम जानते हैं कि प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, इसीलिए हम उसका रेडियस ना लेकर सेमी मेजर एक्सिस लिया है। हमने फर्स्ट लॉ में एक चीज़ निकाला था, ये देखिए, फर्स्ट लॉ में एक चीज़ निकाला था, विच इज़ ए को हम पकड़े थे, ए प्राइम को r1 प्लस r2 बाई 2, विच इज़ इक्वल टू r मिनिमम प्लस r मैक्सिमम 2, विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस। इसको हम पकड़े थे। नहीं, इसका तो ज़रूरत नहीं है, इसको बता दिया हमने। तो अभी इस टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, इसको अगर हम हमारे कैलकुलेशन के लिए, if we don't want to consider the planets revolving around the elliptical orbit, instead we want to consider the planets revolving around an circular orbit, then we have to take equivalent circular orbit of semi major axis equal to radius of the circular orbit। मतलब हमको एक ऐसा रेडियस लेना पड़ेगा जिसका रेडियस, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट which will be equal to the a, which is the semi major axis। तो अगर हम इस वक्त प्लैनेट्स को ऐसा कंसिडर नहीं करें कि दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इंस्टेड इफ यू कंसिडर दैट दे आर मूविंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट whose radius is r, which is equal to the a, which is the semi major axis, then we can say that टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, है ना। इसका स्टेटमेंट अगर हम लिखें, सो फॉर इक्विवेलेंट सर्कुलर ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू रेडियस ऑफ the circular orbit, okay, that is a equal to r, then we can say t square is proportional to r cube। This what was about Kepler's law and its explanations, there is nothing more about it। यहाँ से एक चीज़ आता है which is the satellite motion, ई का चीज़ होते हैं, है ना, satellite motion।
मतलब सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूमते हैं उसका मोशन, सैटेलाइट मोशन। सपोज एक सैटेलाइट है जो अर्थ के आसपास घूम रहा है, उसका हम अगर मास m कंसिडर कर रहा है, ओके, और अर्थ का मास सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल M, और ये जो सैटेलाइट है मास m वो अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं, लेकिन हम उसको सर्कुलर ऑर्बिट में कंसिडर कर रहे हैं विच विद द रेडियस विच इज़ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, मतलब हम जो कहना चाहते हैं कि सपोज दिस इज अर्थ which is of mass m, okay, and one satellite is moving around it. Suppose here is the satellite m and it is moving around like this, it is moving around, and suppose this is the velocity, let's consider it as velocity. So it will experience one force, that is F, centripetal force towards the earth. And let us just see if in reality the satellites move around elliptical part, not in circular part, remember this. So in that case we have to take semi major axis, but here we are taking it as circular orbit because we are considering this r which is equivalent to the value of the semi major axis of elliptical path. Okay, so for revolving around the earth, this small m, let's write it m mass of satellite, capital M mass of earth, v is the velocity of satellite, एग्जाम में ये सब लिखना है वरना मार्क्स नहीं देगा। r is the radius of the circular orbit equivalent to the semi major axis. Okay, and Fc is the centripetal force that is required to move around the earth. So we know Fc equal to mv square by r or m omega square r, sorry, m omega square r, not mv square by r, v equal to omega r, so omega square r square m omega square r, yeah, Fc equal to mv square by r, or we can say m omega square r. This also we know from rotational motion, and also I've told you different times in my video. Okay, the centripetal force is applied by the gravitational force or attraction between the planet and the satellite. यहाँ पे अर्थ और इसके बीच जो अट्रैक्शन है उसको ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है ना। सो वी कैन से दैट दिस Fc मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So we can say that Fc equal to F, so mv square by r equal to g m small m by r square. So mm cancel. So what will be the v square equal to g m r small m, cancel g m by r. So v equal to root over of g m by r. Whose velocity? This v equal to gm by root gm by r. This is the orbital velocity of satellite. That is, we can say that this orbital velocity does not depend on the mass of the satellite. It only depends on the mass of the planet and the radius, that is the distance between them. यहाँ से एक चीज़ निकलेगा, देखो अब टाइम पीरियड को क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई आर बाई वी. वी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. तो वी की जगह हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर, है ना. अभी 2 पाई आर रूट आर बाई रूट जी एम ऐसा कुछ आएगा. सो हम टी स्क्वायर अगर करें तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर,
और इसका स्क्वायर होगा r, इसका स्क्वायर भी gm आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r³ / gm, दैट इज t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³, which is the third law of Kepler. ओके, बस इतना ही था। और क्या था थर्ड लॉ तो ख़त्म हो गया, और एक चीज़ बाकी है अभी, जो है ये चीज़ क्या है, वो है एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टाइम पढ़े थे ना, पोटेंशियल एनर्जी की -G∠M/r पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी भी पढ़े थे, वो जब इसके वेलोसिटी पढ़ा था वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था। इसका वेलोसिटी क्या होता है, v = √2gr, जिसका वैल्यू करीब करीब 11.2 km/s आता है ना, ये सब पढ़े थे हम। तो इसका इस सैटेलाइट का भी निकालते हैं हम, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, EP = -G∠M/m। आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, इसको अभी सही रहेगा, अभी और सही रहेगा, है ना, -Gm/m/r। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी EK = हाफ m/v²। अब देखो एक चीज़ देखो, v² क्या होता है ना, EK = हाफ mv², ये तो हम सब जानते हैं। अब v² = gm/r, हाफ mgm/r। gm/r कहाँ से मिला भाई, orbital velocity v = √gm/r, half m/Gm/r. So that is the kinetic energy. Okay, now coming to the mechanical energy, total mechanical energy. Total mechanical energy is what? Potential energy plus kinetic energy. Okay, so total mechanical energy becomes Gm, that is total mechanical energy becomes EK plus EP. That will be nothing but half mgm/r minus gm/m/r, nothing else. So if we simplify this, we'll get what? R gm स्मॉल m, सॉरी जी कहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, r gm/m माइनस 2r gm/m, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2r² आ जाएगा। तो इसमें से देखो क्या क्या कॉमन जा रहा है, बहुत कुछ कॉमन चल जाएगा भाई, 1 - 2 पड़े रहेगा और 2r² नीचे रहेगा, इसको काट दो भाई, तो ये आ गया G∠M/m/2r। तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि आया, अरे यार एक कैमरे का क्वालिटी क्या हो रहा है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया यह हुआ -Gm, ये माइनस है भाई, माइनस है, -G∠M/m/2r। और पोटेंशियल एनर्जी हमारा आया -G∠M/m/r, एंड काइनेटिक एनर्जी आया हाफ mgm/r। तो इसका अगर हम एक रिलेशन लिखें तो क्या होगा, अगर हम रिलेशन लिखे तो देखो -G∠M/m/2r पोटेंशियल एनर्जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज Gm/m/2r। सो ये तो यही है भाई, सिर्फ एक नेगेटिव साइन है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ kinetic energy. That is the relation between total mechanical energy, potential energy and kinetic energy. देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज़ नेगेटिव, क्यों, बिकॉज सैटेलाइट इज बाउंडेड बाय द प्लैनेट। मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो बाउंड
फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है ना। जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन्स एटम के चार पास घूमता है तो वो भी एक बाउंड फोर्स है, वहाँ पर भी नेगेटिव आता है एनर्जी, है ना। तो यह याद रखना कि कोई भी बाउंड फोर्स हो, क्योंकि यह सैटेलाइट प्लैनेट के साथ बाउंडेड है इसीलिए इसका एनर्जी नेगेटिव आता है। कुछ भी चीज़ें जो बाउंडेड फोर्स की हो या फिर बाउंडेड होता है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी या फिर मीन्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आता है ना। ठीक है, और क्या क्या चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। सपोज ये अर्थ है ना, इसका एक मास है, इसका एक रेडियस है आर, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है। यहाँ से इतना दूरी को हम, सपोज इस दूरी को हम आर कह लेते हैं, यहाँ से अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट तक हम इसको एच कह लेते हैं। तो ये ऐसे घूम रहेगा ऐसे। तो सपोज लेट r equal to r plus h, okay, and then velocity is what, root over of gm by r, so that becomes gm by r plus h. v equal to, this is velocity bro, n लगेगा, v equal to r plus gm by r plus h। हमको एक चीज़ पता है, g equal to gm by r square, gm equal to जी आर स्क्वायर। तो इस वेलोसिटी की जगह v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच की जगह हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच, ऐसा हम लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। नाउ सपोज द सैटेलाइट मूव्स वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, दैट इज ये एकदम यहाँ पर आ गया, एच की कोई मायने ही नहीं रखता। तो हम व्हेन, अरे suppose when h lesser than r, then we can say that v equal to root over of g r square by r। हम h को इग्नोर कर दिया, ठीक है, एकदम मतलब उसका कोई औकात ही नहीं है, ऐसे बोल दिया हम उसको मुंह पे। तो v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी आर, ना हमको इसको वेलोसिटी पता है, इसके वेलोसिटी v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gr, इतना वेलोसिटी किसी को अगर दोगे तो वो निकल जाएगा, है ना। तो हमको कितना परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा इस सैटेलाइट में ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के निकाल जाए, है ना। कितना देना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो हम अगर लिखें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज अगर आप लिखें तो यह आ जाएगा। सपोज इसको वेलोसिटी से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा v बाई इसका जो v है मतलब इंटू 100%, इतना ही परसेंटेज होगा जितना, मतलब इतना ही परसेंटेज आपको इंक्रीज करना पड़ेगा तभी वो इसके वेलोसिटी से बाहर जाएगा, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के बाहर जाएगा। तो अभी देखो बहुत ख़तरनाक है, कैलकुलेशन होने वाला है, रूट 2gr माइनस रूट जी आर बाई रूट जी आर। अगर परसेंटेज वर्क करना आता है ना, ये आप समझ पाए ना कि इसके वेलोसिटी माइनस मतलब वो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज आता होगा आपको, तो वैसे ही है कि जितना मतलब ज़्यादा होगा उतने बाई ये v इंटू 100%। जैसे हम प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालते थे ना, अगर प्रॉफिट होता था कि जितना प्रॉफिट हुआ बाय एक्चुअल प्राइस इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, वैसे ही है भाई। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते थे कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे हम निकालते थे प्रॉफिट परसेंट। दैट इज ओनली, दैट इज एस्केप वेलोसिटी माइनस द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंटू 100%, इंटू 100%, दैट इज जस्ट टू बिकम परसेंटेज। ये आप अभी ना मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो रूट जी आर इंटू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट जी आर, ये बाद में 100 मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो रूट 2 मीन्स 1.414 माइनस 1, दैट बिकम्स 0.414 इंटू 100%, so that is 41.4%. That is, the orbital velocity has to be increased to 41.4% more, so that the velocity of the satellite breaks the gravitational field of the earth
and goes out. Okay, that was hot. All about this Kepler's law, satellite motion, and the chapter is finished. The next video will be about all the numericals. एक चीज़ है जो कि वो दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं. एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एक होता है पोलर सैटेलाइट. देखो इस दोनों में फ़र्क क्या है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, सपोज़ ये अर्थ है तो एक ऐसे घूमेगा, ऐसे. जो पोलर सैटेलाइट है, सपोज़ ये अर्थ है तो एक ऐसे घूमेगा परपेंडिकुलरली, और यह हॉरिजॉन्टली घूमता है. तो जियो स्टेशनरी का जो डिसएडवांटेज वो क्या है. जियो स्टेशनरी का डिसएडवांटेज है 3 जियो स्टेशनरी आपको लगेगा एक अर्थ को कवर करने में. मतलब ऐसे लगे, एक ऐसे घुमाओगे, एक ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तभी आपको एक पूरा अर्थ कवर होगा एक 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से. और पोलर सैटेलाइट का क्या एडवांटेजेस है कि एक ही ये जो पोलर सैटेलाइट है ये एक ही बार में पूरा का पूरा अर्थ रोटेट कर सकता है और सारे के सारे जगह से ब्रॉडकास्ट है टीवी पे दिखा सकता है, टीवी या फिर मोबाइल जो भी बोलते हो. ठीक है, तो जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट यही 2 सैटेलाइट थे. ये आप किताब से पढ़ लेना. वो जो डिसएडवांटेज से लिखा है वो मेरे को नहीं जमता. ठीक है ना. तो बस यही था. तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी. देखो सबसे तो इम्पोर्टेंट बात है, और न्यूटन का जो फॉर्मूला था F=G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, और M1 M2 बाय आर स्क्वायर, जो भी बोलते हो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट था. उसके बाद जी का जो वेरिएशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जी का जो 3 वैल्यू हमको मिला, G=G बाय आर प्लस H होल स्क्वायर. देन जब मतलब अर्थ सरफेस से नीचे आता है, उसके बाद जो जी का जो चेंज होता है, जब घूमने पर जो चेंज होता है, ये सब ठीक है. आज के जो केपलर्स 3 के लॉज के एक्सप्लेनेशन पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका जो फॉर्मूलाज था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सब के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पूरा न्यूमेरिकल्स होगा, सब टॉपिक, सब फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स करूँगा. ठीक है. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अब अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा वीडियो मत देखिए, क्योंकि मतलब देख सकते हैं आप थ्योरी पढ़ने के लिए, कि आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना है तो आप थ्योरी देख लीजिए. लेकिन न्यूमेरिकल्स भाई मैं जेई की तो नहीं कर पाऊँगा. ठीक है ना. मैं बेसिकली जो पढ़ा था हूँ, जो न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा वो CBSE वेस्ट होगा और वेस्ट बंगाल बोर्ड होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स छाया जो वेस्ट बंगाल बोर्ड फॉलो करते हैं उसके ऊपर मैं करूँगा. और CBSE यानी कि NCERT की भी मैं करूँगा. ऐसा नहीं कि NCERT. तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड, दैट इज़ WBCHSE, इसका आप 11 का जो सेमेस्टर 2 है वो देंगे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करूँगा. थ्योरी भी पढ़ाया, आपको पता होगा, पता नहीं. न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से, मतलब क्या भाई करूँगा यार, बहुत अच्छे से, मतलब पता नहीं मैं कैसा करूँगा, वो आप देख लेना. अगर आपको अच्छा लगे तो देखना भाई. ठीक है. और थ्योरी आपको पता है, देख लेना. थोड़ा बस बहुत वॉइस का इशू है, क्योंकि वो हिंदी मेरे को ठीक से जमता नहीं, पर फिर भी हिंदी अगर मैं नहीं बोलूँ तो सबको देखने में दिक्कत होगा, इसलिए हिंदी में भी बोलना पड़ता है ना. तो बस यही है कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग. और जो CBSE का बोर्ड का स्टूडेंट्स है उनके लिए भी, मतलब अगर बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहे हो, CBSE, ICSE, WBCHSE, इन तीनों बोर्ड का, तो तीनों बोर्ड का स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं. और अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थ्योरी तो एकदम मतलब देख ही लो भाई, इससे बाहर नीट का थ्योरी नहीं आता. और जेई की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई मत देखो मेरा वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से भाई जेई की तो नहीं होगा. ठीक है ना. हाँ, नीट का भी कुछ सवाल मैं करूँगा न्यूमेरिकल्स. ठीक है. WBCHSE बोर्ड्स का भी मैं कुछ करूँगा, और CBSE बोर्ड का भी कुछ करूँगा. इन तीनों बोर्ड से मैं उठाऊँगा क्वेश्चंस और करूँगा न्यूमेरिकल्स. ओके. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.